Hello everyone, welcome to my channel Medi Modules. This is Krishna and I'm here with a new series of physiology. And the first topic to be discussed in physiology will be cell, its structure and functions. And as you know, in cell physiology, we have to study cell membrane, potential gradient, transport, active and passive transport, then we have homeostasis and all other stuff. And sometimes it becomes little difficult for some of us to grasp these topics completely. So in this series, I'll try to make these topics easier for you, and it will come in 4 to 5 parts, I guess. And to have a crystal clear understanding of the concepts of this chapter, we should know the basics well. Okay, so let's get started. To begin with, let's start with the definition of cells. So what are cells? Let's see. Cells are the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. तो इनको fundamental, structural and functional unit क्यों कहा जाता है? To understand this, let us take an example. When a building is made, many bricks are assembled together. Similarly, when many cells are assembled together, a living organism's body is made. But the fact is, while living organisms are called living organisms only, when we look around our surroundings, we can find two types of organisms. One is living and another is non-living. And they are called living because they are made up of cells. Even we human beings started with a cell, and it was a zygote. And a cell needs its own nutrition, oxygen, and it can produce its own energy, which is necessary for the growth and repair. And cells even eliminate the carbon dioxide and other metabolic waste from our body. And it shows immediate response to the entry of some invaders like bacteria, virus, or any types of toxic substances. And they can reproduce by division. And there are some exceptions like neurons do not reproduce. So these are the reasons why cells are called the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. So coming to the next point, a cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. So why they are capable of performing life functions? To understand this, let's see this picture. यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा हो रहे हैं, टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज़ जब असेंबल्स होते हैं, एक ऑर्गन बनता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें हम सारी एग्जांपल्स ह्यूमन बॉडी का ही रिलेट करेंगे, और आगे जाके हम सेल्स भी एनिमल सेल ही देखेंगे और ना कि प्लांट सेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। एंड व्हेन एनी ऑर्गन्स आर असेंबल्ड टुगेदर, एन ऑर्गन सिस्टम इज़ मेड, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, जो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ये जब पूरा फंक्शन करता है तो एक ह्यूमन बॉडी फंक्शन करता है, ठीक है। दिस इज़ वाई द सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells, and we have already known about it, and some are unicellular while others are multicellular. Okay, so which organisms are unicellular? Unicellular means those organisms which are made up of only one single cell, and they do not reproduce, or there is no cell division. And multicellular organisms are those where multiple cell division occurs, like us, the human beings. We are a great example for that. Okay, now let's see the few examples of cells. This is amoeba proteus, and this is a unicellular. This is an example for unicellular organism. And here we can see a plant stem cell, and this is a bacterial cell, and here we have nerve cell and red blood cell, and this we can find in animal and human beings. Okay, अब देखते हैं कि how did we come to know about cell. In the year 1665, there was a scientist called Robert Hooke. He observed some slices of cork under a simple magnifying device. Okay, so what is cork? Cork is a simple, bark of a tree, and he kept this cork under a magnifying device. And what he noticed is some partition boxes in that cork slice. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे जो बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल, एंड दिस इज़ हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड वी केम टू नो अबाउट सेल। बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, बट इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक वाज द वन हु डिस्कवर्ड सेल। ओके, अब देखते हैं हम सेल थियोरी को। सेल थियोरी को जानने से पहले जानने के लिए हमको इन साइंटिस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। ही इज़ मैथियस क्लिडन एंड ही इज़ थियोडोर स्वान। जो मैथियस क्लिडन है, इन्होंने काम किया था प्लांट सेल के साथ, और थियोडोर स्वान इन्होंने काम किया था एनिमल सेल्स के साथ, और कंबाइंडली इन्होंने एक थियोरी पुट किया था जो कि थे द फर्स्ट वन, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, and the second is cells are the basic unit of structure and function of living things.
और कुछ सालों बाद there was another a scientist, he was Rudolf Virchow, and he came up with a theory, and he stated that all cells came from pre-existing cells, or he saw cells dividing under the microscope. That's how he could prove his theory. Okay, so this was the basics of cell theory. अब हम देखते हैं सेल कितने टाइप्स के होते हैं. दिस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू हेडिंग्स. द फर्स्ट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड इज़ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, तो यूकैरियोटिक सेल हम कहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पाया जाता है. दिस इज़ बेसिकली फाउंड इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इन फंगी एंड प्रोटिस्ट. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज़ एन एनिमल सेल एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है. दिस इज़ कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा. एंड जब हम कंपेयर करें यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में, ये प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में. Okay, so what we have seen, we have two types of cell. One is eukaryotic and another is prokaryotic. और जैसे कि हम पहले भी मैंने कहा है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, so we will see about an animal cell only. तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ताकि आगे जाके आपको सेल मेम्ब्रेन एंड जो भी अदर स्टफ़ है वो पढ़ने में आसानी हो. तो इसका हम लेबलिंग करते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद रहें. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस न्यूक्लियस. दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. ये हमने पहले भी पढ़ा है 9th 10th में, बट टू जस्ट टू रिवाइज आई हैव एडिड दिस स्लाइड हियर so that it becomes easy for you to revise. And inside the nucleus we find nucleolus. Okay, this is nucleolus, and this is rough endoplasmic reticulum. What is this? Rough endoplasmic reticulum. And this is our smooth endoplasmic रेटिकुलम. ओके, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ आवर गोल्जी एपरेटस. ओके, दिस इज़ गोल्जी एपरेटस एंड दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. आप भी इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको भी याद हो जाए. एंड ये जो आप जेल लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं दिस इज़ साइटोप्लाज्म. और क्या बचा है, एंड दिस ग्रीन बॉल्स आर लाइसोसोम्स. व्हाट आर दिस? दिस आर लाइसोसोम्स. इनको बोलते हैं माइक्रोविली. दिस आर माइक्रोविली. दिस इज कॉल्ड वैक्यूल. और क्या बचा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रियोल. ये जो छोटे छोटे स्टिक्स जैसे हैं उनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. एंड व्हाट एल्स इज लेफ्ट? हाँ, ये जो छोटे छोटे राउंड्स हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये जो बाहर का लेयर है दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. अब थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में. सो सबसे पहला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में वी कैन नॉट फाइंड एनी न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप कोई न्यूक्लियस नहीं है. एंड यूकैरियोटिक सेल में वी कैन फाइंड ए न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज़ अ न्यूक्लियस. एंड प्रोकैरियोटिक्स आर स्मॉल एंड सिंपल एज वी नो. एंड what is this? There is no organelles. Okay, prokaryotic cell में हमको कोई organelles नहीं देख पाएंगे, जबकि eukaryotic cell में we have multiple organelles. Okay, and this have a cytoskeleton. Eukaryotic cell we can find cytoskeleton, but there is no cytoskeleton in prokaryotic cell. And this eukaryotic can be multicellular, but prokaryotic are unicellular only, and these are bacterias generally. And in eukaryotic cell we can find some cilias, but not in prokaryotic cell. Okay, and but also we can find some similarities between them, like both have ribosomes, both have DNA, both have cytoplasm, that they have a cell membrane, and some have flagella also. Okay, so this was a basic introductory video for this, and see you in the next video. And आपको जो भी समझ नहीं आया हो या फिर और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगला वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.